Hello. So we're back with the stream, and in this stream, we are going to once again solve a couple of questions. Um, I am not in a mood of solving questions, plus, I have some stuff to do today. So we are just going to solve one question and end the stream after solving this one question because I'm hungry and I have to do a lot of things. So let's just finish up this. Let's just try to solve this question. This is Leetcode 1996, the number of weak characters in the game. Let's quickly solve this and then we will end the stream after this question. You're playing a game that contains multiple characters and each of the character has two main property, attack or defense. You're given a 2D integer array properties where property of I is attack and defense. A character is said to be weak if any other character has both attack and defense level strictly greater than its character attack and defense level. ठीक है, more formally is this, return the number of weak characters. So no character than the other. अच्छा, तो I have to return the number of weak characters. Okay, so this is like very easy. I can just keep one temp variable, or maybe I can say max attack comma max defense equal to, so yeah, one thing is if length of properties less than equal to 1, in that case return 0, otherwise my answer is 0 and I will return my answer and I will say max defense comma max attack is property. So I might want to sort this properties dot sort, but then it's n log n and I believe I can do it in O of n, but anyways, I really do not care about the complexity right now because it is a slightly easy problem for me. Yes, so I have max defense max attack. Now I'm going to say 1 to length of properties, and now, but okay, so I have to return the number of weak characters. Number of weak characters. Wait, let's try to solve it in O of n only. I have to return the number of weak characters. Let's say I have 5 comma 5. Now comes 6 comma 3. I check if the top one both is greater. So if I have so which is not possible. Let us think for a couple of seconds here and then just give me some time to think. So first one is 1 comma 5, second one is 10 comma 4, third one is 4 comma 3. Okay, could there, so I have to return the number of weak characters. तो इससे बड़ा होना चाहिए दोनों हिस्से में, ठीक है. तो अभी जब ये फर्स्ट आ रहा है तो सबसे मैक्सिमम अटैक 1 है, मैक्सिमम डिफेंस 5 है, वो पर एक ही कैरेक्टर का है ऐसे, ठीक है. अगले वाले का डिफरेंस आएगा ना, तो कैसे पता करोगे. अच्छा, 1,5. अब अगर मैं इसको सॉर्ट कर दूं तो 1,5, 4,3, 10,4 हो जाएगा, ठीक है. मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि ये बराबर हो 1,5, 1,6, 10,4. Does it matter? No, it doesn't.
मैंने सॉर्ट कर दिया और उसके बाद मैं सिंपली चेक कर लूँगा। क्या चेक करूँगा कि जो मैक्सिमम वाला होगा, जो सबसे बड़ा होगा, ऑफ कोर्स वो सबसे बड़ा होगा, उसमें ये मैक्सिमम आएगा और ये भी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम आएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है, बट ये तो मैक्सिमम आएगा ही आएगा। अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा मुझे ऐसे करना पड़ेगा कि अगर मुझे इसका चेक करना है 1,5 का, ऐसा हो सकता है 1,5 हो, ठीक है, 2,7 हो और 10,3 हो। तो अब मैं 1,5 को इससे कंपेयर करूँगा तो नहीं होगा, लेकिन इससे कंपेयर करने पे हो जाएगा क्योंकि वहाँ दोनों बड़े हैं, ठीक है। तो मैं पूरे पे O ऑफ n² तो करने वाला हूँ नहीं। व्हाट इज़ अ बेटर प्रॉब्लम? सॉर्ट करने के बाद अगर मैं इसको एरेज में डाल दूँ, सेपरेट एरेज में, ठीक है, 1 2 10 को, 5 7 3 को सेपरेट एरेज में, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इससे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कहाँ है, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट यूजिंग अ स्टैक, राइट। तो फिर मैं चेक कर सकता हूँ कि इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ठीक है। अगर नहीं कर रहा है दोनों का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट एग्जिस्ट तो मत करो ऐड आंसर में, फिर हो जाएगा। तो ये O ऑफ n log n सोल्यूशन होगा। वैसे log n भी नहीं करने की ज़रूरत है, आई कैन जस्ट सिंपली डू O ऑफ n इन टाइम एंड O ऑफ n इन स्पेस यूजिंग स्टैक। तो ये मेरा थॉट है, स्टैक ग्रीडी मोनोटोनिक स्टैक, ठीक है। स्टैक से हो जाएगा, सिंपली नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालना है मेरे को, दोनों का स्ट्रेट फॉरवर्ड है बहुत ही। तो एक स्टैक बना लो, ठीक है, जिसमें अभी कुछ नहीं है। अब हम ऐसे कर सकते हैं, वेट, हाँ, एक स्टैक बना लो जिसमें अभी कुछ नहीं है, और अब हम सिंपली ऐसे लिखेंगे। मान लो पहले हम फर्स्ट उसका निकाल रहे हैं, ठीक है। तो फॉर आई इन रेंज, फॉर मे बी लेट्स से प्रॉपर्टी इन प्रॉप इन प्रॉपर्टीज़ मैं करूँगा अटैक कॉमा डिफेंस इक्वल टू प्रॉप, ठीक है। दो स्टैक बनाऊँगा, अटैक स्टैक कॉमा एम्प्टी डिफेंस स्टैक, this is also an empty array. Now what I'm going to do is, now simply I will say that, now I'm going to simply say that if, let's talk about the attack, if length of attack stack and attack stack of -1 less than attack, तो attack stack dot pop, finally attack stack dot append attack, next greater attack equal to empty array, next greater defense equals to empty array, ठीक है। वेट, अगर टॉप वाला छोटा है, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कैसे काम करते हैं, 5 6 3 है, तो स्टैक में मैंने 5 डाल दिया, अब 6 आया, 6 बड़ा है 5 से, तो नेक्स्ट ग्रेटर 6 बड़ा आ रहा है, तो इन सब के लिए आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 6 को डाल दो, ओके। तो वाई लेंथ ऑफ दिस एंड अटैक ऑफ दिस, तो यहाँ पे मेरे को इंडेक्स रखना पड़ेगा। तो फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ प्रॉपर्टीज, प्रॉप इज प्रॉपर्टीज ऑफ आई, और अटैक की जगह इंडेक्स आई, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर लेंथ ऑफ स्टैक है एंड अटैक के टॉप पे छोटा है जब तक इस अटैक से, तब तक पॉप करो, ठीक है। पॉप करोगे तो टॉप आएगा तुम्हारे पास, हाँ, पॉप करो
अच्छा, तो -1 फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ प्रॉपर्टीज, टॉप को पॉप करो एंड जी अटैक ऑफ टॉप क्या हो जाएगा, अटैक आई, ठीक है। फाइनली आई को अपेंड कर दो, ये हो गया। अब इसके बाद मैं एक बार प्रिंट करा के देखना चाहता हूँ कि एन जी अटैक क्या होगा, और मैं रिटर्न 0 करा देता हूँ, ऑल्दो इट्स नॉट रेलिवेंट राइट नाउ। 1 2 -1, सो इससे जस्ट बड़ा 1 पे है, देन इससे जस्ट बड़ा कहाँ है ही नहीं ना, तो कैसे हो रहा है। इफ़ अटैक ऑफ स्टैक -1 इज लेस देन अटैक की जगह यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अटैक ऑफ स्टैक ऑफ -1 ऐसे होगा, तो आंसर आना चाहिए इससे बड़ा 1 है, इससे बड़ा -1, इससे बड़ा -1। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अटैक ऑफ दिस ऑफ 0, ठीक है। आई थिंक कितने से अभी हमारा ये स्टैक हो गया। सिमिलरली एक दूसरा स्टैक जो हमारा है एन जी डिफेंस अटैक, इसका भी हम कोड लिख देते हैं एंड फिर हम सिंपल तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। तो हम बोलेंगे इफ लेंथ ऑफ डिफेंस अटैक, डिफेंस स्टैक नॉट डिफेंस अटैक, इफ दैट स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी एंड इट हैज़ एंड द टॉप एलिमेंट ऑफ दिस स्टैक is having less defense than my current defense, then I will pop from defense stack and I will say that my defense of top is I, and finally I will of course defense attack defense stack dot append I, right. Now I just want to print attack, now I just want to print these two stacks to see if my code is working fine, because if it is, then we can simply loop over these stacks and get the answer. Should be very straightforward from now onwards. Okay, so for the first case, our standard output is 1, 2 and 0, 2. No, we don't want the stack, we want the arrays. So for the first time it is this. Now if you ask me for 5, 3, 6, what is the next greater element? Well, for 5, 3, 6 the next greater element comes out here, but this is -1, which is not correct. So maybe I need to do this while length of, no, I do not. I have 5, 3, 6 here. I put 5 in my stack, then I check 3 and I say 3 is not greater than 5. So since 3 is not greater than 5, so I won't pop anything, I'll just append this. So I need to do while instead of if, right. Now it's gonna work hopefully. So yeah, this is 2 to -1. Yeah, in this case the next greater is not there, but in this case it is there. Alright, so this is fine. Now my answer is 0 initially, and I'm going to return answer. So what I need to do now is simply loop over the stack. So for that I'm just going to say for I in range length of properties, and I'm going to say if ng attack of I, if that is not a negative number, and ng defense of I is not a negative number, then I add 1 to the answer. Now if I run the code,
I should be able to get the correct answer, but I'm not getting the correct answer. For the first case, it is that print ng attack comma ng defense. The correct answer is 0. But for the first case, you see the next greater element is there. Oh, if they are not equal to -1, and ng attack of I is equal to ng defense of I, right? This is also unnecessary since we cannot take two different soldiers. Now the answer for last one should be 1, but the answer for last one is -0. Why? Because this is not -1, this is not -1, and these are equal. But my defense says that okay, so maybe we do have to sort this. Yep. This is just O of n. Output 0, expected 1. If I sort this, this is 1, 1, 2, 1, 2, this is 1, 1, 1, 2. So 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. So one of them is 1, 1, 2, 2. Another one is 1, 2, 1, 2. तो इस केस में आंसर 1 आना चाहिए. तो मैंने जब सॉर्ट करा तो यस, ये सही आया. उसके बाद नेक्स्ट ग्रेटर मेरे को दिख रहा है, नेक्स्ट ग्रेटर मेरे को दिख रहा है और वो इक्वल भी है. तो आउटपुट 0 कैसे आ रहा है? Next greater for this is 0, 1, 2. बट एक और नेक्स्ट ग्रेटर है. ऐसे तो नहीं हो पाएगा फिर ये. आई हैव टू डू समथिंग एल्स नाउ. क्या करना पड़ेगा फिर हम क्या इसको एक साथ स्टैक में रख के कर सकते हैं? 1, 1 अभी है, फिर 2, 1 आया. तो मैंने बोला कि क्या ये दोनों बड़े थे? नहीं थे, तो इनको ऐसे ही रखो, आंसर ऐड मत करना. फिर 2, 2 आया. क्या ये दोनों बड़े थे? नहीं थे, तो ऐसे तो कभी नहीं होगा. अरे सॉर्ट करो, पहले सॉर्ट करके देखते हैं. 1, 1 है, फिर 1, 2 आया, रख लो उसको. उसके बाद 2, 1 आया, उसको भी रख लो. फिर 2, 2 आया. तो while this is true, keep subtracting. Maybe that could also be a solution. So my stack is an empty thing for I in range length of properties. ठीक है? What I'm going to do is I'm going to say that my current attack comma defense is properties of I. Now I'm going to say while length of stack and stack of -1 of properties. So this is there. So now properties stack -1 of 0 is less than attack, and properties stack -1 1 is also less than defense. In that case, stack dot pop
answer plus equal to 1 stack dot append I. बट अब इसमें प्रॉब्लम क्या पता है, प्रॉब्लम ये है इसमें कि एक सेकेंड मेरे को कॉल आ रहा है. हेलो, बोलो. अच्छा वो मैं स्ट्रीम कर. हाँ हाँ हाँ. बोलो. लव यू टू. नहा. ओके. ओके बाय. Sorry for the distraction. So now what I was saying is, but then this question will create a problem in such way that what if this was let's say what if it was 1 comma 1 1 comma 2 and then I added 2 comma 2 and I'm like, okay, this is not possible, keep it here. But that's not how it's gonna work, because I would have to check from the bottom one, right? So should I not just check from the bottom one? I mean, should I not try that out? From collections import dq stack equals to dq. So it's not a stack anymore, it's a doubly ended queue. Let's call it stack only, I don't care. Yeah, we're on the first part. So what I'm saying is, if, but that's also not true, because even if it's true, like there could also be 1 comma 2 in the beginning and then there is 2 comma 1 and then there is, so it is, let's say 1 comma 3 and then I have 3 comma 3. And if I'm checking from here, I still won't be able to get to this point. So I need to figure out how to fix this, and it's not that easy, right? It is not that easy. Let's check the hint. Sort the array. Yeah, I have done that. How can you, on the basis of attack values, and group character with the same attack together? People having the same attack, I can group them together. I can do that. For example, 1 1 1 2 and 2 1 2 2. These are my groups, let's say. But then I know that how is this going to help me? Character in one group will always have a lesser attack value than the character of the next group. Hence, we will only need to check if there is a higher defense value present in the next group. How can I use this information? So, first one is 1 comma 1, then comes 1 comma 2. If I restart, if I say 2 comma 2, then I say if it's in the same group, just put it here, or maybe if it's having the same value, then just find out what is the maximum value. But then there is no stack, right? So another possibility that I can think of right now is, if I group them
So if I say that I have this for so I group them as such. I say 1 is this, then I say 2 is 2 comma 1 comma and 2 comma 2, right? And then I say that I use stack over this to find the, or I don't even need to use stack since this is sorted and grouped in one place. I know what is the maximum value from this. So the maximum value from this is 2 for the defense, and I know that the maximum value from this is 2, right, for the defense. Now what I can do is still not clear what to do. Still not clear, still not very easy to figure out. Let's check someone's solution for this. Sort the second dimension in decreasing order is neat, which I didn't think of. So they say that if you sort it such that first one is maximum, second one is minimum, then you have car max and answer for this comma d in properties. If defense is less than the current maximum defense, तो आंसर में से +1 कर दो, else car max equal to d. So let me check कि इससे क्या होगा. For example, if I do this and if I print properties here, then this would be the maximum and then this would be the minimum. तो इससे क्या होगा? I loop over and I check if the defense value is less than the current maximum defense value, current maximum. So it isn't. So the current maximum is 1. Then I check if the current maximum is less than the current maximum, which it would be. So the answer would be +1. But ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना? समझ नहीं रहा हूँ. Current maximum अभी भी 1 रहा है. Then the defense value is 1. आंसर में एक और ऐड हो जाएगा ऐसे तो नहीं, ऐड नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब कुछ तो होगा. लेट्स सी. तो हर इसके बाद मैं डी कॉमा कर मैक्स प्रिंट कराना चाह रहा हूँ. सबसे पहले d की वैल्यू 1 थी, नो मेरे को प्रॉपर्टीज भी प्रिंट कराना है. सबसे पहले d की वैल्यू 1 थी, करंट मैक्सिमम की 1 हो गई. फिर d की वैल्यू 2 थी, 2. तो 2 छोटा है, 2 छोटा है क्या? अच्छा, d इज़ लेस देन, ऐसा तो है नहीं. और d लेस देन कब होगा? जब वो नेक्स्ट पे स्विच हो जाएगा, वरना d लेस देन हो ही नहीं सकता. भाई दिस इज़ इनसेन लेवल कोडिंग स्किल्स जिसने भी ये लिखा है. वेरी वेरी इनसेन. शीश, मतलब आई एम स्टन्ड बाय दिस पीस ऑफ कोड. लव इट, love it. But let's check the other solution now. Other solution is that once again you're sorting stuff. तो वहीं पे गड़बड़ हुई थी. The keys that I tried is this. It just enlightened when I see this board. तो अगर मैं ऐसे सॉर्ट करूँ x of 0, x of -1, तो एक और अलग अलग सॉर्टिंग करके अलग अलग क्रेजी काम कर रहे हैं लोग. प्रिंट प्रॉपर्टीज़,
1 2 1 1 2 2 2 1 1 तो ये क्या है, सबसे पहले 0 लेकिन वो मैक्सिमम। अच्छा, इसको ना हम लिखते हैं बिकॉज ये बहुत अच्छे से हमको इंटरेस्टिंग चीज़ देके गया है। इसने हमको दिस इज़ अ इंटरेस्टिंग स्टैक प्रॉब्लम। Very interesting use of sorting and stack together. I love it. I love this problem. सेव हो क्या? ओके, इसके बाद क्या बोल रहा है? while stack and stack का -1d, हाँ मतलब सेम ही चीज़ है, तो अभी ठीक है। एनीवेज, नाइस क्वेश्चन, नाइस टाइम। आज हम वेरी टायर्ड, टू बी ऑनेस्ट। आई एम रियली टायर्ड एंड I do not have energy to solve more questions today, so we'll have to call it a day for now.